Okay. Now we'll go for the relation between velocity of the object and image in a plane mirror. So plane mirror आगे रखेगा. We are running towards the mirror or parallel to the mirror, perpendicular to mirror. What will be the velocity of the image? We have to see. Okay, plane mirror का. So first case one है where object moves perpendicular to mirror. Object moves. We are finding between object, the velocity of the object and image, right? So first one is the object is running towards the mirror. Okay, and that too perpendicularly to the mirror. देखो perpendicular के तरफ भाग रहा है. So now how to find the velocity of the image? Okay. You tell me, this is a mirror. Xy is the distance of object from the mirror with respect to mirror के साथ we are measuring, right? Okay, image कितना होगा? Image also same distance में रहेगा. And you know the line joining the object distance and image distance is perpendicular. Okay, perpendicular to each other. Okay. Now, if I take this as no origin, I can write like this: x o minus x o is equal to xi. Hmm. Minus xo is equal to xi. Distance is same, right? Distance is same. I can write like this also: xi is equal to minus, sorry, xo equal to minus xi. Both are same only, right? This is a displacement. Okay. Now I want velocity with respect to time. That become first. If the first case में now object moves towards the mirror perpendicularly, then image कितना distance में भागेगा, that one we are learning. Okay. So we know that the distance from the plane mirror to the object is x4, and the distance of image of the plane mirror is also same distance, right? xo, the distance. I can write like this: xo is equal to minus xi. These are with respect to mirror. Xi is the distance or displacement with respect to mirror, and this xi is equal to displacement with respect to mirror to the image. Okay. Now I want velocity, right? And differentiating dxo by dt is equal to minus dxi by dt, and vector form है differentiating. Okay. Now what is dx by dt? Rate of change of displacement is called as velocity. So velocity of the object is equal to minus of the image. But image and object is with respect to mirror only. See, displacement is measured with respect to mirror. Then therefore velocity is also with respect to mirror only. So I can write like this: VO m with respect to mirror is equal to minus VI m with respect to mirror. Okay. Why we are writing with respect to mirror? You'll understand. Here mirror also sometimes it can move. उसका वजह से we are doing all with respect to mirror and we are solving. Okay. Now relative velocity मालूम है ना? VAB is VA minus VB. I say VOM is VO minus VM is equal to minus VI minus VM. So if I send inside, क्या आएगा? Minus VI plus VM. VO minus VM. So I am sending this set. So therefore VM is equal to VO plus VI by 2. This is the formula you have to learn. Velocity of the mirror अगर दिया तो use करो this formula. Velocity of the mirror is given. Velocity of the mirror, if the mirror is at rest. If mirror is at rest, क्या होगा? Velocity of the mirror is 0. 2 into 0 is 0. 0 is equal to VO vector plus VI vector. So when I send this side, VO is equal to minus VI. Okay. So
ऑलवेज मतलब इनडायरेक्टली इफ द मिरर इज एट रेस्ट, आप कितना स्पीड में भागेगा टुवर्ड्स द मिरर, सेम स्पीड में इमेज ऑल्सो विल गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मिरर. ओके, दैट्स व्हाई वीवो इज इक्वल माइनस वी, सेम स्पीड में जा रहा है. इफ द मिरर इज ऑल्सो मूविंग, you have to use this one, VO plus VI by 2. So they'll tell they are running, the object is running towards the mirror perpendicular to the object. So velocity of the image will be same. आपको क्या डालने का, माइनस डालने का, माइनस VI is coming negative direction, right? Minus. So that finally आपको remember करने का ये formula. VM perpendicular is equal to VO perpendicular. Why perpendicular velocity is only you should take always here in this formula में. VI perpendicular by 2. This is the formula you have to learn. And we have to put all with sign. अगर right side गया तो positive, left side गया तो negative. That one you have to follow all your sign conventions. We are doing reflection with plane mirror. आज plane mirror खत्म करेंगे. So VM perpendicular is equal to VO, velocity of the object. VI is velocity of the image, perpendicular velocity only by 2, like average जैसा mirror का. Okay, चलो क्वेश्चन करो. Suppose object is moving 5 meters per second right side towards the mirror, and the mirror is moving minus 1 meters per second, and this velocity is a perpendicular velocity to the mirror, right? So directly is telling to find the velocity of the image. VI is telling to find. We know the relationship between कौन सा formula use करेगा? VM vector is equal to VO vector plus VI vector by 2. All are perpendicular, all are velocities only should take. Use करो with sign convention. Answer बोलो. -7 meter per second. Yes, -7 meters per second. ओके, मिरर में इस तरफ है ना -1 इज इक्वल टू वीवो, उस तरफ है 5 प्लस VI/2. सो -2 -7, VI इज इक्वल टू -7 meters per second. मतलब इनडायरेक्टली वेलोसिटी ऑफ द इमेज इज रनिंग टुवर्ड्स द मिरर विद 7 meters per second. ओके, चलो नाउ सेकंड केस. सेकंड केस क्या है? ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू द मिरर, पैरेलल टू द मिरर. सो पैरेलल में आपको फील हो रहा होगा. सपोज मिरर इज हियर, आई एम रनिंग 2 meters per second पैरेलली, द इमेज आल्सो विल रन कम साथ साथ, राइट? मेरे साथ ही आएगा, नहीं तो कल आएगा. व्हेन आई रन इमेज विल रन टुमारो विल कम, सर मैं आई गॉट हर्ट, कुछ आएगा बोल के, नहीं ना. सो इमेज साथ साथ आएगा. मतलब व्हाट इज द मीनिंग इज एट t equal 0, सी ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज. फर्स्ट ऑफ ऑल सेम प्लेन मिरर का कितना डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस पर आएगा. व्हेन द ऑब्जेक्ट एट t equal 0 में स्टार्ट हुआ, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम t के बाद मान लो इट इज रीचिंग हियर, ऑब्जेक्ट इज रीचिंग हियर. ओके, मतलब इट कवर्ड y डिस्टेंस. सेम थिंग हियर आल्सो, इट कवर्ड एट टाइम t equal to t में y डिस्टेंस ही कवर करेगा. Distance of the object and distance of the image will be same, right? That means indirectly I can tell like this: velocity of the object which is running parallel is always equal to velocity of the image, parallel velocity only we should take. Okay, irrespective of the motion we should take, मतलब आपको कैसे भी स्पीड जा रहा है, ये भी जा रहा है, बोल तो सेम वेलोसिटी लेने का. ओके, चलो that तो parallel velocity का बाहर करने का. These are the two formulas. मतलब आपको सर्टेन एंगल में दिया तो आपको स्प्लिटिंग द कंपोनेंट्स के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का परपेंडिकुलर फॉर्मूला यूज करो, एंड पैरेलल का पैरेलल यूज करो, एंड देन वेक्टोरियल यू कैन ऐड आई कैप जे कैप लगा सकते हैं. ओके, चलो ना करो. सपोज मिरर इज एट रेस्ट, वेलोसिटी ऑफ द इमेज आई वांट, आई गिव ऑप्शंस.
So it is moving 10 meters per second at certain angle 37 degrees. Mirror is at rest. So of course split up करने का I want to find velocity of the image in terms of I cap J cap. Okay, split up करो इसका x component y component. So इस तरफ वाला v वो perpendicular कितना? Option B. Yes, correct, perfect. Minus 8 I cap plus 6 J cap. So it is perpendicular is 10 cos 37 and this one is 10 sin 37. So cos 37 is कितना? 4 by 5 8 and इसमें 3 by 5 so 6 meters per second. Okay. And Shyam, you know, perpendicular में the velocity is mirror is at rest. Therefore, image also will move with the same velocity but in opposite direction. Right? Perpendicular में. That means velocity of the object at perpendicular is equal to minus of velocity of the image perpendicular. Why? Mirror is at rest. Right? We can tell. And that means here minus 8. मतलब 8 minus 8 I cap in terms of I cap में in this direction में. And parallel में you know 6 meters per second ऊपर जा रहे हैं. Same way 6 meters per second ऊपर ही जाएगा. So it is J cap, right? So plus 6 J cap. So आपको separate ले लो. Then I cap J cap लगाने के. That's it. ना करो. Now mirror is also moving. तो perpendicular में perpendicular का फॉर्मूला यूज करो, parallel में parallel का फॉर्मूला यूज करो एंड सॉल्व. पैरेलल में कुछ इफेक्ट ही नहीं होगा, मिरर ऐसे मूव होने दो, किधर भी मूव होने दो, पैरेलल का सेम वेलोसिटी. नॉट गिव ऑप्शंस, नहीं तो आई कैप देख रहे हो बोल रहे आंसर, जे कैप कैलकुलेट नहीं कर रहा. Minus I cap plus 5 J cap. नो, आई कैप वाला रॉन्ग है. Minus 11. हाँ, 11 आई कैप प्लस 5 जे कैप. यस करेक्ट. See, a mirror is moving to the left side, right? So use the perpendicular में use the formula this one. V perpendicular is equal to VO plus VI by 2. That one find करो. VO plus VI by 2 यूज करेंगे. टेल में कितना आया ये VM का कितना आया टेल में? VO perpendicular plus VI perpendicular by 2. 5. 5 या? Why 5? No. Image velocity find करने का. Okay. Either is you took the components here, right? So 5 root 2 into 1 by 2, 1 by root 2 is 5 meters per second is going with the velocity, right? इस तरफ velocity, right? And now substitute in there. Mirror किस तरफ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है ना? -3 is equal to VO perpendicular. So perpendicular velocity is 5 plus VI perpendicular by 2. So -6 minus 5 is -11. So VI perpendicular is -11 meters per second. Okay. ऐसे जा रहा है. Now आपको पैरेलल में 5 है ना, so क्या होगा? 5 will be तो same है, 5 will be same. So finally answer is -11 I cap plus 5 J cap. Because पैरेलल में मिरर का वेलोसिटी कैसा भी जाने दो, the parallel velocity will be same. Okay. So आप separate कैलकुलेट करो एंड सॉल्व. तो मैंने So if the mirror is moving parallelly to the velocity of the कैसे object, भी रहने दो, पैरेलल टू द वेलोसिटी होने दो, देन क्या होगा? हम लोग रनिंग में वो इमेज भी आपके साथ ही आएगा ना. वो तो so नहीं if, भागेगा. if there's some relative velocity between the object and the image, the object and the mirror parallelly. हाँ, कैसे भी इफेक्ट नहीं होगा, कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा. दिस ऑल आर विद रिस्पेक्ट टू मिरर ओनली वी आर देयर. करेक्ट. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वही है. नो, मिरर भी सिर्फ सब एंगल में जा रहा है.
पैरेलल का वेलोसिटी ये आने से कुछ इफेक्ट नहीं होगा। आप पैरेलल रनिंग कर रहे हो, देखो ऐसे आ रहे हैं, ये रनिंग कर रहे हैं, ये भी साथ साथ ही आएगा आपके साथ, तो पैरेलल में इफेक्ट ही नहीं होगा। वेलोसिटी ऑफ द इमेज वी आई चाहिए, फाइनल वी आई। minus 10 root 3 I cap and plus 5 root 5 J cap. यस करेक्ट। आया। हम्म। ये भी स्प्लिट अप करने का श्रीराम, इसको भी स्प्लिट अप करो, 5 cos 30, 5 sin 30, so 5 cos 30 is 5 into √3/2, so it is 5 √3/2, and 5 sin 30, so 5 into 1/2, so it is 5/2। नाउ मिरर का वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन मालूम है, वाई डायरेक्शन मालूम है, इसको भी स्प्लिट अप करो, so 10 cos 30 is 10 √3/2, so it is 5 √3, 10 sin 30 is 5, खत्म। आफ्टर स्प्लिटिंग इसका कुछ काम नहीं है, इसका भी कुछ काम नहीं है। नाउ एक्स डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन यूज करो, एक्स डायरेक्शन में इट इज गोइंग, ऑब्जेक्ट इज गोइंग लाइक दिस, मिरर इज कमिंग लाइक दिस, सो सिंस मिरर इज मूविंग वी आर यूजिंग द फॉर्मूला वीएम परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एवरेज करने का। ओके, सो साइन कन्वेंशन के साथ लगाओ, विल गेट द आंसर। Sure. Now we'll go for the number of image formed by the two plane mirrors. Number of image formed by the two plane mirrors. So आपको फॉर्मुलास आता है ना नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करना, थोड़ा थोड़ा ओके चलो एक एक जाएंगे। टू प्लेन मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, ओके, हाउ मेनी इमेजेस विल फॉर्म Satvik? Parallelly I put two mirrors. Infinite. Infinite. Why? So the reflection also, the image also occurs as an object for second mirror. Okay. रियालिटीज हो गया स्कूल में? Yes. ओहो, ऐसे बोल रहे हैं इनफिनिट बोल के, एक्चुअली लोअर क्लासेस में भी किया था ना ये वाला। चलो ओके, ऑब्जेक्ट इज प्लेस, मान लो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, मिडिल में लगाया टू प्लेन मिरर्स का M1 M2 1 सेंटीमीटर दूर। ओके, नाउ हियर आपको लर्न करना पड़ेगा नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, आंसर इज इनफिनिट, इनफिनिटी आएगा इमेजेस। ओके, सो कैसे देखो, मिरर 1 के हिसाब से देख रहा हूँ, of the distance is how much, 1 centimeter, you know that of the distance is equal to image distance formed I1, which is 1 centimeter, right, first image formed. Similarly for this M2, this is object, right, object kitna centimeters दूर में, 1 centimeter दूर में, so definitely image also will form, second image is formed 1 centimeter दूर, right। now इसका रे डायग्राम के हिसाब से ऑल्सो वी कैन टेल, देखो वन रे ऑब्जेक्ट से ऐसे आ रहा है, नॉर्मल इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्ट बैक लाइक दिस, वन रे आ रहा है, बिकॉज इमेज फॉर्मेशन, इमेज I1 फॉर्मेशन के लिए आपको 2 रेस आर रिक्वायर्ड। ओके, सो रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड किया तो 1 इमेज इज फॉर्म्ड हियर, इधर वन वन रे आ रहा है, दूसरा रे कैसा आएगा, इट विल गो लाइक दिस, ऑब्जेक्ट से आ रहा है एंड इट विल गो लाइक दिस, इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ मिरर को, ओके, ये जाएगा हिट करके इसे जाएगा, राइट। हाँ, सो ये रे, if I extend backwards, the ray is meeting here, actually image is formed, right,
So I1 is formed such, the ray diagram के हिसाब से I1 is formed like this. Okay. हाँ, now देखो मिरर 2 को किधर से लग रहा है ऑब्जेक्ट, मिरर 2 को वेयर द ऑब्जेक्ट मतलब रे इज कमिंग फ्रॉम वेयर, इट इज लुकिंग, इट इज फीलिंग दैट द रे इज कमिंग फ्रॉम I1, the ray is coming from I1. This is acting like a virtual object. I told right, वो ऑब्जेक्ट नहीं है उधर, इट इज एक्टिंग लाइक वर्चुअल ऑब्जेक्ट. मिरर को लग रहा है कि अरे मेरे मेरे ऑब्जेक्ट से रे इज कमिंग, उसका उसका जिम्मेदारी है टू फॉर्म द इमेज. ओके, सो वो क्या करेगा, इसका इमेज कैसे करेंगे देखिए, अप्लाई करेंगे. देखो ए मिरर टू से दिस इमेज इज हाउ मच डिस्टेंस, मिरर टू से 1 1 1 3 सेंटीमीटर इस तरफ है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है. सो मिरर बोलती है कि अरे मेरे को ऑब्जेक्ट आ रहा है, डेफिनेटली आई वांट टू फॉर्म द इमेज. सो अगेन 3 सेंटीमीटर्स में इधर फॉर्म करेगा. सो 3 सेंटीमीटर दूर में इट फॉर्म्स I3. ऐसा so many images will be formed. For this mirror, this is acting like a virtual object because ray diagram draw करने से आपको फील लगेगा कि इधर से मिरर को ऐसा रे आ रहा है, so उसका भी इमेज फॉर्म होगा. ऐसा करके 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 we'll get infinite number of images. So लिखो there are infinite number of images when the two plane mirrors parallel to each other. An object is placed middle. And these are infinite lengths. मिरर को एक्सटेंड करके कर सकते हैं इनफाइनाइट लेंथ से. इफ द लिमिटेड लेंथ दे विल मेंशन लिमिटेड लेंथ, डोंट एक्सटेंड बोल तो. ओके, इफ देयर लिमिटेड लेंथ्स फाइंड करो. देखो एग्जांपल इनफाइनाइट इमेजेस, 2 प्लेन मिरर्स है. देखो इधर एक मिरर है, पीछे एक मिरर है, शी इज सिटिंग स्टैंडिंग हियर. देखो इनफाइनाइट टिंग 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 लाइक रेलवे स्टेशन जैसा रहेगा पूरा. नाउ मिरर्स आर फाउंड. ओके, नाउ टेल मी ये लिमिटेड लेंथ वाला है M1 M2, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर सेंटर में लाइक 1 सेंटीमीटर मान लो. टेल मी हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड. ये लिमिटेड लेंथ है, वी कैन नॉट एक्सटेंड. Is the answer 2? देखिए सब चलो. तो देखो फर्स्ट इसका डिस्टेंस मिरर 2 का ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 1 सेंटीमीटर. डेफिनेटली इमेज विल बी फॉर्म्ड हियर I1 1 सेंटीमीटर दूर में. सिमिलरली मिरर 1 को ऑब्जेक्ट इज 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस सेम राइट इन प्लेन मिरर में. सो हियर I2 इज फॉर्म. ओके, रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे. देखो ऑब्जेक्ट से रे विल बी कमिंग नॉर्मल इन सेंस, इट विल रिफ्लेक्ट बैक. रिफ्लेक्शन को एक्सटेंड बैकवर्ड्स, ईयर 1 रे आ रहा है. दूसरा इट गो लाइक दिस एंड इट गो लाइक दिस राइट. ये एक्सटेंड किया था बैकवर्ड्स, द इमेज इज फॉर्म. 2 रेज इज मीटिंग, अपीयर टू मीट हियर राइट. इधर देखो रिफ्लेक्शन नहीं है, अगेन इसको रिफ्लेक्ट करने का मिरर नहीं है, वो चली जाएगा. दैट्स इट. सो ओनली 2 इमेजेस फॉर्म, दैट्स इट. देयर इज नो सो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म दिस 2 इमेजेस. ओके, इधर से भी सेम, इधर से रे आ रहा है, इधर रिफ्लेक्ट बैक, इधर से रे एक्सटेंड करेगा बैकवर्ड्स एंड अपीयर टू मीट एट हियर. सो इमेजेस फॉर्म देयर I1 I2 ओनली 2 इमेजेस. बोल के आंसर लिखो. ओके, now देखो when 2 mirrors are perpendicular to each other, famous one, we know right number of images कितना आएगा. Sadik will tell, come on. So perpendicular to each other, this one and this one, and मान लो angular bisector में we are joining. मतलब एंगल बाइसेक्टर होने दो, मतलब एंगल बाइसेक्टर मींस इसका एंगल इक्वल है, ऐसा होने दो, किधर भी होने दो. मुझे कितना नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड, हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड. 3 अप. आज रियापिक्स हो गया ना स्कूल में, बोलो नंबर ऑफ इमेजेस कितना है. देखो दिस इज वी कैन कॉल मिरर 1 मिरर 2. ये फेमस क्वेश्चन है,
आपको फॉर्मूला से आ जाएगा। फॉर्मूला अभी नहीं बोल रहा हूँ, वाई बिकॉज आपको थोड़ा सर्कुलर कॉन्सेप्ट बोल के आपको आइडिया चाहिए, देन यू विल गेट द फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे, बिकॉज आपको विल अंडरस्टैंड ओवरलैपिंग वगैरह में आपको फॉर्मूला से नहीं आएगा। नंबर ऑफ फॉर्मुलास आर देयर, बट हाउ मेनी ओवरलैपिंग आर देयर, हाउ मेनी नॉन ओवरलैपिंग आर देयर, दे लास्ट इन मेन एडवांस में, दे लास्ट नॉर्मली फॉर्मूला में मेंस में पूछेगा तो ऐसा पूछेगा, बट एडवांस में हाउ मेनी ओवरलैपिंग इमेजेस आर देयर बोलते तो फॉर्मूला से नहीं आएगा। ओके देखो, we know this one already. How much distance object is there? That much distance the image is there. Okay, and here also how much distance object is there? That much distance में image is formed. I have to इसको extend करो backwards. ये infinite length है, okay, extend कर सकते हैं मिरर में, okay. Now आपको ये this for this mirror 2, this is acting like a virtual object. Okay, for mirror 2 this is acting like virtual object. So ये कितना डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस नीचे आएगा I3. Now same way for mirror 1 this is like a virtual object. So ये कितना डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस आएगा, एंड यू नो ये ओवरलैपिंग केस में आएगा। ओवरलैपिंग इधर इमेज वी आर गेटिंग ओवरलैपिंग केस, मतलब इसका इमेज ओवरलैप हो जा रहा है। सो टोटली वी शुड काउंट लाइक वन ओनली। So how many images are there? 1, 2, 3 images are there. Okay. So फार्मूला से आ जाएगा। फार्मूला ऐसा कैसे पता चलेगा सर, कैसे बोलते फार्मूला से आ जाएगा। 360 बाई थीटा वो वाला फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे, आगे दूंगा, बट अंडरस्टैंड ये 3 वाला इंपॉर्टेंट है। ओके, रे डायग्राम ऑल्सो यू कैन डू, राइट? रे डायग्राम के साथ कर सकते हैं ना आप। चलो नो नो बोलो, लिमिटेड लेंथ का कितना होगा? देखो एग्जाम्पल आई टेल यू कि इधर आई पुट ए, देखो 2 मिरर्स आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर, ऐसा 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 लगा परपेंडिकुलर, ओके 90 डिग्री से। इधर कैंडल, रियल कैंडल लगा है। आपको देखो मिरर में इधर इधर 3 इमेजेस आर फॉर्म्ड एंड दिस नथिंग बट ओवरलैप इमेज। इसका इमेज ओवरलैपिंग इमेज लगेगा आपको, बट प्रैक्टिकली इफ यू सी प्लेस 90 डिग्रीज मिरर में, देखो ऐसा लाइन लगा के कैंडल देखो, अरे वाह 3 इमेजेस, अरे अच्छा है। ओके, now limited length में I place perpendicular to each other. This one mirror we can't extend now. We can't extend. Number of images बोलो, कितना images आएगा? कितना? मान लो this 1 centimeter, 1 centimeter. हाँ कटल बोलो सेम। So number of images are 2 ही आएगा। ओके, वाई? इसका इमेज ए डिस्टेंस में I1, इसका इमेज विल बी I2। ओके, नाउ देखो आपको रे डायग्राम के हिसाब से ये फर्स्ट रे इज कमिंग, रिफ्लेक्टेड रे, वन रे इज रीचिंग हियर, वन ऐसे आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है एंड रीचिंग हियर। सो दिस इज I1 इज फॉर्म्ड। ये निकल जा रहा है, देयर इज नो मिरर देयर, अगेन वो जाके रिफ्लेक्ट नहीं होगा, निकल जा रहा है बिकॉज लिमिटेड लेंथ है ना। सो इसका बेस है इधर इधर क्या आएगा, इधर ऑब्जेक्ट का इमेज का डिस्टेंस कैसे आएगा टल में, वन इज इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्ट होके नॉर्मल इंस्टेंस जाएगा, वन इज ऐसे आएगा, रिफ्लेक्ट होके जाएगा and appear to meet at here. That means only 2 images are formed in this case. Okay, limited length वाला we cannot extend, उसी में ray diagram draw करके we can tell number of images formed. Okay, sure. Now So we'll isn't it possible for a ray to directly touch I1 and hit mirror 2 and form a third image? what I1 Hits mirror 2 directly. ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना, इसको देखो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर्म कैसा हुआ, वी ड्रू द डायग्राम, राइट? उसके बाद दिस इज नॉट एक्टिंग हियर, राइट? दिस इज मिरर हियर, ऐसा नीचे है ना, ये वाला नहीं है, ये वाला तो पूरा इमेजिनरी लाइन, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन में। ओके, सो रिफ्लेक्ट करके नहीं आएगा बैक साइड, दैट इज द प्रॉब्लम। ओनली I1 I2 2 रेस ही आएगा, मतलब 2 इमेजेस ओनली फॉर्म दिस। ओके, ये सब कुछ a ray could hit the second mirror from I1, right? I1 से किधर हिट करा, ऐसा ना? Yeah. ऐसे ऐसे बोलते हो, आपको एक मिरर ऐसा रखो,
आप दूर में एक फ्लैट में मिरर डालो, ऑब्जेक्ट ऐसा है, इधर से आएगा, इधर से जाके वो मिरर में गिर के फिर से उठ के फिर हमको दिखेगा नहीं ना. That is Okay. not possible. Yeah, okay. Only we can see the image only when the object का रेस जाके हमारा आई पर गिरेगा तो then only we can see the image. So इधर रे कोई रे डायग्राम नहीं रहेगा इसका, इसका ऑब्जेक्ट से जा इधर जाके फिर से आके आई वन के पास नहीं आएगा. okay? और आई वन से भी नहीं आएगा. ओके चलो, नाउ सर्कुलर कॉन्सेप्ट देखो, ये थोड़ा हार्ड जैसे लगेगा आपको, बट सर्कुलर कॉन्सेप्ट विल बी यूजफुल इन एडवांस एंड उसमें ओवरलैपिंग में बोल सकते हो. सपोज आपको 60 होने दो, 120 होने दो, कितना भी होने दो, सपोज 120 डिग्रीज इज देयर, द एंगल बिटवीन टू मिरर्स 120 डिग्रीज, सो आपको 360 बाई थीटा करेगा. 360 बाई 120 हाउ मच, 3 जा, उसमें ओवरलैपिंग कितना है, नॉन ओवरलैपिंग कितना है, वो सब कुछ मालूम पड़ने का, उसका एक्सटेंशन ओनली एडवांस में बचेगा. सो उधर तक फंस जाएगा, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, उधर आप ऑप्शंस ले, सपोज 3 इमेजेस आर फॉर्म मींस उधर ऑप्शंस में 3 ओवरलैपिंग इज 1, 3 ओवरलैपिंग इज 2 बोलेगा, उधर रुक जाएगा ऑप्शन, अरे कौन सा है, दैट्स द प्रॉब्लम. सो उसके लिए सर्कुलर कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे. ओके सो बाद में इसका भी क्रिस क्रॉस मेथड से डायरेक्टली वी कैन सॉल्व. ओके तो सर्कुलर कॉन्सेप्ट समझो, करवाया स्कूल में सर्कुलर कॉन्सेप्ट करवाया सात्विक, सर्कुलर कॉन्सेप्ट यू अंडरस्टूड इन द. Because I was absent half the week. ओके एब्सेंट है आप, सर्कुलर कॉन्सेप्ट दे करवाया, दे टोल्ड फॉर्मूला ओनली. ओके चलो, सपोज मान लो एंगुलर बाइसेक्टर में आई एम पुटिंग द ऑब्जेक्ट. एंगुलर बाइसेक्टर मींस एग्जैक्टली हियर आई एम पुटिंग 45 degrees. From the first mirror से ऑब्जेक्ट इज 45 degrees एंड सेकंड मिरर से एंगुलर डिस्टेंस बोलते हैं, एंगुलर डिस्टेंस इज 45 degrees. एंगुलर बाइसेक्टर में आई एम पुटिंग दिस ऑब्जेक्ट. ओके एंड फेमस वन यू नो ऑलरेडी, हाउ मेनी इमेजेस फॉर्म आर फॉर्म व्हेन दे आर परपेंडिकुलर, 3 इमेजेस आर फॉर्म्ड. ओके चलो नाउ देखो, आपको एंगुलर डिस्टेंस देखो, मिरर 1 से कितना एंगल में द ऑब्जेक्ट इज देयर, 45 degrees. मिरर क्या करेगा, इमेज ऑल्सो फॉर्म्ड एट एंगल में 45 degrees, राइट ऐसा फॉर्म होगा I1. ओके चलो मान लो, हाँ ठीक है, मान लो ये एंगुलर डिस्टेंस का कहानी. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दूर है, सेम इमेज डिस्टेंस विल बी फॉर्म्ड लाइक दिस, वी कैन डू लाइक दिस आल्सो. ये वाला देखो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दूर है, सेम इमेज का डिस्टेंस आल्सो इतना ही फॉर्म करेगा. ओके आई जॉइन दिस वन, दिस लाइन एंड दिस लाइन. ओके नाउ me this angle is 45 degrees. Okay, these two triangles are congruent or not, tell me. The triangles are congruent because distance 90, common side. Okay, these two triangles are congruent. Two triangles are congruent means this side is equal, this side and this side is equal. Okay, same way now mirror 2 का देखेंगे. देखो ऑब्जेक्ट कितना दूर डिस्टेंस है, इमेज ऑल्सो इतना डिस्टेंस है, राइट I2. नाउ एंगल का देखो, मिरर 2 से कितना एंगल ऑब्जेक्ट इज देयर, 45 डिग्रीज में, राइट. सेम एंगुलर डिस्टेंस में 45 डिग्रीज में इधर इमेज इज फॉर्म, राइट 45 डिग्रीज, राइट. नाउ आपको मालूम पड़ने का कि दिस टू ट्रायंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, 90 90, दिस डिस्टेंस आर इक्वल, कॉमन साइड, राइट कॉन्ग्रुएंट में दिस आल्सो इक्वल, these 3 distances are equal. Okay, when kabhi bhi, whenever from a fixed point say, if 3 distances are equal, if I join the locus kitna kaun sa shape hoga, if I join all the points, this one this one this one, which shape will get from fixed point say, if 3 distances are fixed, udhar se join karega to which form, it forms circle. Okay, always circle form होगा. And you know always
the images, number of images are always formed on the circle. उसका रेडियस कितना है, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस ज्वाइन किया, दैट डिस्टेंस वाली रेडियस है. सो दिस रेडियस, दिस रेडियस, रेडियस. ओके, नाउ इसका भी कैसा आएगा, इसका इमेज ऑलरेडी यू नो, इसका एग्जैक्टली कितना डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस में. द थर्ड इमेज आल्सो फॉर्म्ड ऑन द सर्किल ओनली. थर्ड इमेज इज आल्सो फॉर्म्ड. हाउ मच एंगल में, इफ यू सी फ्रॉम मिरर में, देखो मिरर में I3 कितना एंगल में है, टेल मी. I3 कितना एंगल में, देखो I3 फ्रॉम मिरर से 1 मतलब 45, ठीक है. ऑब्जेक्ट है देखो, सी फॉर I2 will act like a virtual object for this one, for mirror 1. For mirror 1 I2 is acting like a virtual object. ये कितना एंगल में है, टेल मी. कितना एंगल में I2 is here, 45, 45, 45. हाउ मच एंगल, 135. सेम फ्रॉम मिरर 1 से 135 में रहेगा ये वाला. सो 45, 45, 45. Here that's why here image is formed. Similarly इसका also for mirror 2, for mirror 2, see I3 किसका किसका इमेज है, इसका इमेज है, इसका भी इमेज है. ओवरलैपिंग हो रहा है ना, ओवरलैपिंग हो रहा है ना. दैट्स व्हाई इसका एक बार देखा, इसका भी देखो. पर मिरर 2 दिस एक्टिंग लाइक ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, राइट. सो मिरर 2 से कितना एंगल में है, 135 डिग्रीज में. सेम 135 डिग्रीज फ्रॉम मिरर 2, 45, 45, 45 डिग्रीज में ओवरलैपिंग हो जाएगा इसमें. ओके, नाउ इस सर्कुलर कॉन्सेप्ट को थोड़ा और भी शॉर्टकट करेंगे, क्रिस क्रॉस मेथड बोलते हैं. क्रिस क्रॉस मेथड, इवन इफ यू सी इन योर मटेरियल में ये डायग्राम्स रहेगा. देखो विदाउट नोइंग दिस वन आल्सो वी कैन ड्रॉ दिस वन नाउ. ओके, नाउ देखो, सिंस यू अंडरस्टूड एक सर्कुलर कॉन्सेप्ट, नाउ और भी सिंप्लीफाई करेंगे. देखो ऑलवेज M1 M2 लिखो, M1 M2 इमेजेस का लिखेंगे. इमेज, फर्स्ट इमेज किधर है, ऑब्जेक्ट इज 45 डिग्रीज मिरर 1 से, मिरर 1 से 45 डिग्रीज. इमेज इज आल्सो 45 डिग्रीज, सो 45. एंड मिरर 2 से कितना एंगल में, मिरर 2 से कितना एंगल में, इमेज आल्सो विल बी, ये पूरे इमेजेस है. वी आर राइटिंग व्हाट आर द, वी आर राइटिंग दैट इज इमेजेस ओनली. ओके, नाउ कितना एंगुलर डिस्टेंस है, 45. एंगुलर डिस्टेंस 45 में इमेज आएगा ना, सो 45. एंड आपको एंगल बिटवीन देम इज हाउ मच, मिरर का एंगल इज हाउ मच, दोनों को 90, राइट, 90. राइट. सो फर्स्ट आप क्या करेगा, कोई भी एंगल देने दो, 60 प्लस 120 कुछ भी देने दो, M1 M2 डालो. ऑब्जेक्ट का कितना एंगुलर डिस्टेंस, सेम एंगुलर डिस्टेंस रहेगा ना, सो पहले कितना एंगल दिया वो डाल दो. ओके, एंड द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स इज 90, दैट ड्रॉ करेंगे. ओके, नाउ 90 प्लस 45 इज 135, एंड 90 प्लस 45 इज 135 डिग्रीज. कंटिन्यू करो ऐसे. नाउ क्रिस क्रॉस मेथड करो, एंगल बिटवीन देम इज 90. ये 90 तो फिक्स है, सो 90 प्लस 135 इज 225, एंड 135 प्लस 90 इज 225. ग्रेटर देन 180 में डिग्रीज में स्टॉप कर लो. इट्स नॉट कंसिडर दैट वन. ग्रेटर देन 180, ग्रेटर देन इक्वल टू 180 आल्सो टू स्टॉप. ओके, 1 इक्वल टू 180 स्टॉप करो. सो कितना होगा, ये ग्रेटर देन इमेज विच नॉट काउंट, इज आल्सो विच नॉट काउंट. ओके, नाउ आपको लग रहा है 1 2 3 4 इमेजेस आर फॉर्म्ड. ओके, उसमें से ओवरलैपिंग कौन सा है, ओवरलैपिंग कैसे है आइडेंटिफाई करेगा. सेम बोले तो वी कैन नॉट से ओवरलैपिंग, इधर भी सेम है ना, देन हियर आल्सो ओवरलैपिंग आएगा. ओवरलैपिंग बोले तो कंडीशन क्या है, ओवरलैपिंग. देखो सपोज इफ आई ड्रॉ दिस वन ओनली, दिस I3, राइट. so this 90, this angle, this angle, टोटल मिलकर कितना एंगल होगा, टोटल एंगल 360. whenever sum of this is 360, there is a overlapping, one overlapping. Okay, so sum of the angles is angle is 360 degrees, then we can say it is overlapping. So now the 135 plus 135, 270 plus 90 is 360. So 360 आ रहा है, that means one overlapping case है. So that's why ये दो images को we should not count one and try to count one only. So I1, I2, I3. This is the overlapping case. Okay, it's not count this one. So number of images formed is 3, and how many overlapping is 1. So 3 images
and one overlapping. This only circular concept only we are putting here in this crisscross method में. Okay, देखो 135 degrees में virtual object is 135 degrees में image is formed. That's why 135 put. वो कैसा आया? Without knowing the diagram also, 40 plus 90 135, 45 plus 90 is 135. Okay, धीरे धीरे करे तो आ जाएगा. नोट करो. Suppose मान लो तो मेरे साथ नो नीड ऑफ सर्कुलर कॉन्सेप्ट. नो आपको इजी हो जाएगा. ओवरलैपिंग फाइंड करने के लिए ओनली यूज दिस मेथड. अगर डायरेक्टली आपको नंबर ऑफ इमेज पूछे तो डायरेक्टली यू कैन डू फॉर्मूला. अगर उसमें ऑप्शंस में नंबर ऑफ ओवरलैपिंग बोले तो यू हैव टू गो फॉर दिस मेथड. ओके, सो मान लो ऑब्जेक्ट इज 20 डिग्रीज एंड इसमें 30 डिग्रीज में रखा. सॉरी, ये मिरर ऐसा नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है. मिरर इज सम एंगल में. ओके, M1 M2 20 30. Okay, now खत्म करो. You tell me number of images formed and overlapping कितना है. Okay, now M1 M2 रखेंगे. So पहले क्या है, M1 से कितना एंगल में 20 डिग्री है ना. इमेज आल्सो विल बी फॉर्म 20 डिग्री ओनली, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग 20. एंड M2 से कितना एंगुलर डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट, 30 डिग्री. नाउ इधर क्रिस क्रॉस मेथड करो. एंड एंगल बिटवीन देम इज टू मिरर्स का एंगल इज 50 degrees. Okay, now 50 plus 20 70, 50 plus 30 80 degrees. Again crisscross method, angle is 50 degrees. So 80 plus 50 is 130 degrees and 70 plus 50 is 120 degrees. Again do crisscross method. Now 50 degrees. Okay, so 120 plus 50 is 170 and 130 plus 50 is 180 degrees. 180 we should not count. Okay, again continue. 50 degrees. So 180 plus 50 is how much? 220 degrees. We should not count, right? So number of images formed कितना है? And check any overlapping is there. Tell me. 820, 225, 220. ये count नहीं करने का, right? हाँ. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 images are formed. Okay, उसमें से tell me how many overlapping? Any overlapping? Angle sum is 360. देखो anything? देखो 120 plus 50 plus 30 how much? 150, 300 आ रहा है. 360 नहीं आ रहा है ना कोई में. So that means no overlapping. So answer is no overlapping. ऑप्शंस में क्या देगा? 7 1 ओवरलैपिंग, 7 नो ओवरलैपिंग, 7 2 लो ओवरलैपिंग, ऐसे देगा. ओके, कर सकते हैं ना? करो ना, आप ही करो, बोलो. M1 M2 object is placed at 20 40. Number of images I want and overlapping cases in furniture trying. Five images, one overlapping. Yes, correct. That overlapping will be done only by this method only. नोट्स अच्छे से बनाओ. रिएक्टिव्स बहुत डिटेल में जा. नोट्स, एक्चुअल नोट्स एंड पीवाईक्यूज क्या तो बस इनफ है, उससे ज्यादा नहीं. सी आप बाउंड्री लिमिट बनाओ कभी भी. आई एम टेलिंग यू, जेईई मेंस में बहुत बार बोल रहा है सम पीपल, ये बुक करेगा, वो बुक करेगा, वो समथिंग करेगा, बट फाइनली आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा. कॉन्फिडेंस आने के लिए यू हैव टू मेक ए बाउंड्री लिमिट. आपको पीवाईक्यूज, इफ यू सी रिएक्टिव्स नियरली
270 to 300 questions are given. और क्या चाहिए, all concepts are there, everything is there, neatly करो each and every PYQs में, and this notes पढ़ लो, and formula sheet also with you. This is your thing. And one of the girl recently she got in triple last year student only, triple IT में CS she took, she is going also started. So the thing is वही है सेम मेंटेन करके, but what is the characteristics, some characteristics will be there. वो characteristics every year I will observe, that characteristics वाला people will definitely get the seat. That characteristics क्या है, वो are up to date, they are up to date रहेगा. Like if I give first year also they will do the questions. So वो that planning में delay हो गए तो last में time नहीं मिलेगा, ये बोल के बोलेगा. And last 2 months 100% they done papers, full papers. मैं वेबसाइट में डालता गया, she go on finishing and आंसर्स भी डाला, पूरा सॉल्व करके पूरा 2 months किया, कंटिन्यूस किया. बट थिंग इज अप टू डेट रहना, फार्मूलास कीप इन माइंड, लॉक करके. अभी कंप्यूटर में एआई भी आ गया, if you ask that will tell, right, answers that will tell completely. मरे हाउ द मेमोरी पावर ऐसा रहने का थोड़ा, आपको फर्स्ट ईयर फार्मूला पूछेगा तभी आपको माइंड में ओके दीज आर थिंग्स, वो कंसिस्टेंट रेगुलर प्रैक्टिस से आएगा. फॉर्मूला शीट नहीं है तो फिर से विल से व्हाट आर द फॉर्मूला सेंड, तो विल सेंड द फॉर्मूला शीट. बट आपको प्रिंट आउट लेके व्हेनेवर टाइम इज देयर गो ऑन बाइटिंग, नो वन विल टेल. आपको पेरेंट्स भी क्या देखेगा, फाइनल रिजल्ट देखेगा, कैसा पढ़ रहा है, क्या आया ठीक है बोल के बोलेगा. सो दैट्स व्हाई आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी कर. नॉर्मल कॉलेज लो वेस्ट है, नॉर्मल कॉलेज लो इंजीनियरिंग करना वेस्ट नहीं होगा. मतलब सैलरी आई विल राइट बॉन्ड पेपर में लिख के देता हूँ, एक बार वो आपका इंटरव्यू होगा ना, वो आपको आएगा ना कितना सैलरी बोल के, एक बार ओपन करके देखो दैट टाइम 4 years के बाद उतना ही सैलरी रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा. नॉर्मल कॉलेज वेस्ट है, नहीं आए तो देयर इज नो अदर वे वही करने का. बट आई एम टेलिंग नॉर्मल कॉलेज इंजीनियरिंग करना सैलरी वाइज में खत्म करना. अभी ट्रिपल आईटी में एंड इसमें देखो कभी भी उनका लेवल ऑफ द सैलरी विल बी डिफरेंट, वो लोग सेटल हो जाएगा पूरा. ओके चलो, नाउ आपको फार्मूला देखेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, फार्मूला देखेंगे. ओके सो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ऑलवेज n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा करने का. n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा. ओके if n is even, if n is even number you are getting, okay, the term number of images will be n minus 1. okay, n minus 1 either symmetric होने दो, asymmetric होने दो. number of images is n minus 1. symmetric मालूम है ना, symmetric means exactly आपको मिडिल में रखेगा तो symmetry, theta, then this is called symmetry. asymmetry means suppose मान लो this is theta, this is theta by 2, so it is called asymmetry. okay, so कुछ भी होने दो, number of images for even is n minus 1. okay, now if n is odd, symmetric है तो odd में symmetric है तो use n minus 1, and asymmetric है तो simply n. odd में थेड़ा आएगा, even में n minus 1, and इसमें symmetric है तो n minus 1, asymmetric है तो n. now suppose mirror is 90 degrees. now 90 first n करो, 360 by 90 is how much, 4 is even, right? number of images is 3, we already proved 3 बोल के. okay सीधम ट्राई करो. suppose मान लो I want angle between two mirrors is 30 and I placed asymmetry में. okay, now number of images कितना है, angle between two mirrors suppose I place like this 20, 10, number of images formed. asymmetry. tell me श्रीराम, आपका फॉर्मूला फर्स्ट n फाइंड करो. श्रीराम टेल मी थीटा इज कितना है, श्रीराम टेल मी व्हाट इज द थीटा एंगल बिटवीन दिस टू, 13, so 360 by 30 is how much, 12. 12 is even or odd,
Even. Even में asymmetry होने दो और symmetry होने दो n-1. So 12 minus 1 is 11. 11 images are formed. Okay. So by this, your complete plane mirror successfully done.